Welcome once again to Push English classes. Today I am going to explain stanza 3 of second poem, An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. I hope you would have liked my first two parts. If at all any doubt is there, please do write in the description. I have given in description box my Facebook ID. Please write down your questions in that. I will clarify your doubts. As we have done yesterday, that it is an appalling reality that unless and until something is done for these slum children, the quality education is not going to improve. First of all, the first two stanzas, just in 2 lines, I'll try to conclude it. The first stanza says about the description of the children who are studying in that school. Second stanzas tell us about the kind of slum, the area they are living in, the congested areas, the congested homes, and how their future is very bleak there. It's not so bright there. And now coming on to the third stanza, so please focus on my textbook. And now children, I'm going to start third stanza. Please see this. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their crammed holes. So we have already read about Shakespeare and map. Just to remind once again, Shakespeare is symbolic of, he is epitome of literature, education, language, whereas map symbolizes prosperity, development and flourishing civilization. And both these, that is Shakespeare and map, they are related to the world of rich. How? I'll explain you. See, Shakespeare is an epitome of high literacy excellence, high literary excellence, but in the slum schools where hardly any learning takes place, where children are troubled by disease and despair, literary training is a far cry. Similarly, map, it doesn't depict these poor people, it depicts only the rich people. So map is a bad example because when you look at the map of the world, one is aware of the beautiful world provided to us by God. But the world for these children is confined to narrow streets, congested streets of the slums. So map for them is bad because it arouses in them the hopes and aspirations which may never be fulfilled. तो शेक्सपियर क्यों एक खराब व्यक्ति है और मैप क्यों एक गलत उदाहरण है इन बच्चों के लिए? क्योंकि जब ये बच्चे शेक्सपियर की तरफ देखते हैं और इनका ना पेट भरा है, ये इतने भूखे हैं, माल नरिश्ड हैं, अंडर न्यूट्रिशन हैं, तो इनको वो हाई लिटरेरी लैंग्वेज कहाँ समझ में आएगी? तो शेक्सपियर इनके लिए कोई औचित्य नहीं रखता. उसी तरीके से मैप एक गलत उदाहरण इसलिए है क्योंकि इस मैप में जब भी हम इस मैप को देखते हैं हमें खूबसूरत दुनिया दिखती है जो भगवान ने हमें दी है, और जब हम इन बच्चों की दुनिया की बात करें तो वो सिर्फ घिरे हुए हैं गंदी नालियों से, गंदगी, कूड़ा करकट और गंदी झुग्गी झोपड़ियां. तो इन बच्चों के लिए मैप इसलिए बैड एग्जाम्पल हो क्योंकि इसने वो उनकी आकांक्षाएं और उम्मीदें जगा दी जो उन्हें लगता है शायद कभी पूरी ना हो पाए. अब आते हैं ships, with ships and sun and love tenting them to steal. So children, please pay attention. These 3 words, ships, sun and love. These 3 words are important because ship is symbolizing wealth and movement. Sun is symbolizing glory and authority. And love is symbolizing compassion and care. So these 3 things, they are only there in the world of rich. So these 3 things, because the poor children, they don't get this, these 3 things are actually symbolizing the material possession, joy and brightness of life, which these children are deprived of. So what happens? These children are compelled to commit crime. Tempt them to steal here means they are compelled to commit crime to have an access to these riches and joys of the world, which they are deprived of. तो इन बच्चों को ये शिप, सन और लव, ये तीनों ही चीजें मजबूर करती हैं चोरी करने के लिए,
और नहीं, अगर ये चोरी नहीं करते, अगर ये क्राइम नहीं करते, तो एक ही रास्ता और बचता है, और वो ये फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स। क्रैम्ड होल्स यहाँ पर मेटाफर है। मेटाफर इसलिए क्योंकि ये कंजेस्टेड घरों को एक्सप्रेस कर रहा है। इट इज रेफरिंग टू कंजेस्टेड हाउसेस। And the lives of the slum children cleverly turn and twist in their crammed holes. It means they secretly spend their entire lives striving and struggling for sustenance in that small, dirty, hole-like homes where life is slither and slog. तो इन बच्चों की जिंदगियां, इन सब की जिंदगियां इस कूड़े के अंबार के साथ, इस कूड़े के ढेर के साथ, उन छोटे छोटे कंजेस्टेड घरों में गुजर जाती हैं। कब खत्म हो जाती हैं समझ ही नहीं आता। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, अब ये जिंदगियां जो शुरू तो हुई, दिस फॉग टू एंडलेस नाइट, एंडलेस नाइट हैज गॉट अ मीनिंग हियर। इट इज सिंबलाइजिंग द कांस्टेंट सफरिंग एंड पेन इन देयर लाइफ। और ये एक्सप्रेशन इसलिए भी यूज किया है बच्चों क्योंकि ये उन स्लम बच्चों के मिजरेबल और पैथेटिक कंडीशन को दर्शा रहा है। यानी सुबह शुरू हुए और रात के अंधेरे तक ये सिर्फ अटेम्प्ट्स करते रहते हैं कि किस तरीके से इनकी जिंदगी बस ये जीवित रह जाए। सो देयर लाइफ इज फुल ऑफ मिजरी, होपलेसनेस एंड सफरिंग। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, ऑन दिस स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. So slag heap here refers to, heap का मतलब होता है कूड़े का ढेर। So large pile of waste material that remains after metal has been removed from rock. Actually it means that slag is those who have read chemistry they must have heard about this. Actually यहाँ पर हम सिर्फ इतना समझ लें, dirt और garbage को हम slag heap कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ये एक्सप्रेशन skins peeped through by bones, this is, see what happens, the slum children are deprived of basic amenities. उनकी जिंदगियां ऑलरेडी बहुत shattered और broken होती हैं। तो ये बच्चे इतने undernourished होते हैं कि they look more like skeletons. So please pay attention here. This expression is specially used to refer to the weak, scattered, worn out looks of these slum children, and they look more like skeletons. ऐसा लगता है मानो उनकी हड्डियां उनके thin skin से बाहर झांक रही हैं। So their bones literally peeping out of their thin skin cover और thin skin layer. उसके बाद से आते हैं spectacles of steel पर। Spectacles of steel, यहाँ पर alliteration है बच्चों, you can see this alphabet S is getting repeated. So alliteration is there, and what does this mean? Spectacles of steel means these are the steels which are made up of, these are the spectacles which are made up of steel. Steel is quite cheap, it is heavy, it is uncomfortable, with mended glass-like bottle bits on stones. Here glass-like bottle bits on stones is again one figure of speech is here, and that is simile, where these mended glass are referred to as bottle bits. Now bottle bits are, these bottle bits are the bits of bottle which have been shattered or broken when they are thrown on stones. तो ये जो glasses, जिस स्पेक्टिकल जो लगाया है इन्होंने, ये भी उस कांच के टुकड़ों से बना है जो इधर उधर से उन्होंने इकट्ठा किए, बिखरे हुए कांच है। तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी को भी दिखाया गया कि उनकी जिंदगी भी इसी कांच के टुकड़े की तरह बिखरी हुई है। All of their time and space are foggy. Slums so blot their maps with slums as big as doom. So foggy slum, इनका ज्यादातर वक्त, इनका ज्यादातर समय इन्हीं foggy filthy slums में गुजर जाता है, और actually their life is like living nightmare. Life there is worse than death. वहां पर जिंदगी वाकई में मौत से बदतर होती है, और हर दिन मौत एक ना एक जिंदगी को अपना विक्टिम बनाती है। तो कहीं ना कहीं इनका सारा वक्त, इनका सारा समय इन स्लम्स में गुजर जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स, तो ये जो अमीरों का जो मैप है, उनको ये इनकी जिंदगियां ये ब्लॉट कर देती है। इट इज लाइक अ स्टेन मार्क, उनके लिए धब्बा है उनकी जिंदगी पर। और ये स्लम्स छोटे मोटे स्लम्स नहीं है, these slums are as big as doom. So again here is a simile where slums have been compared to doom. Now what is doom? Doom is something which is destructive, destruction, death day is called doom. And why these foggy slums are compared to doom? Because ये इतनी बड़ी है जितनी बड़ी सच्चाई होती है मौत। तो मौत की सच्चाई जैसी भयानक भयावह है ये स्लम एरियाज, और ये एक ब्लॉट की तरह है इन मैप्स पर,
और इसीलिए इनको डूम से कंपेयर किया गया है, इनको डूम से कंपेयर किया गया। तो आई होप बच्चों ये स्टैंजा आपको समझ में आया होगा।